डीटा को मल्टी डायमेंशन आरे को ऐड करके आ गोटे मल्टी डायमेंशन आरे रे हम स्टोर करियो। That's the example. Today, class matrix addition, we have defined two array, int A and int B. Okay, int A and int B, that two array we define. Now we store this array. We store this value in another array, int C, 2 row and 3 column. Okay, ने ये दीटा array element को हमें एडी स्टोर करेंगे. So for int I is equals to 0. Okay, दीटा रो पे फर्स्ट जो आउटर लूप एटा ला आउटर लूप एटा ला इनर लूप आउटर लूप टा काउंट करिवो रो पे इनर लूप टा काउंट करिवो कॉलम पे int I is equals to 0 0 less than 2 condition is true तापर इनर लूप को आसीला इनर लूप रे रहिवो j0 j is equals to 0 is j is equals to 0 0 is less than 3 condition is true तो c रे i0 अछि j0 अछि माने फर्स्ट पोजीशन c रो i0 j0 पोजीशन ने a रो i0 j0 ऐड हबो a रो i0 j0 रहला 1 j रो i0 j0 रहला 7 तो 7 plus 1 रहला 8 तो एटी 8 स्टोर रहला j रो वैल्यू इंक्रीमेंट रहला 1 1 is less than 3 condition is true 1 is less than 3 condition true होला जेतरा हमरा कंडीशन ट्रू होची तापरे 0 रो 1 कॉलम 0 रो 1 कॉलम रे एठी 2 अछि एठी 8 अछि तो 8 plus 2 हे गेला 10 पुनी j रो वैल्यू इंक्रीमेंट होला 2 2 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू 0 रो 2 कॉलम 0 रो 2 कॉलम रे की अछि 3 ओके सो 9 plus 3 हे गेला 12 तो एठी हम 12 शो कला पुनी i रो वैल्यू इंक्रीमेंट होला 3 3 is less than 3 कंडीशन एठी फॉल्स हे गेला एठी तले फॉल्स हे होची अगेन हमरा आउटर लूप को जीवो एठी जीवो i रो वैल्यू इनिशियली हमरा 0 थिला i रो वैल्यू i plus plus इंक्रीमेंट होला 1 1 is less than 2 condition is true इनर लूप को आसिला j is equals to 0 0 less than 3 condition is true तो c रो 1 इंडेक्स 1 then 0 i रो वैल्यू 1 रहला j रो वैल्यू 0 रहला हम सेकंड रो को आसिले जेंति a रो 1 j रो 0 माने एटा 4 तो 10 plus 4 14 हैला then again j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हैला 1 1 is less than 3 condition is true 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम रे एठी ऐड हैला केते 5 और 11 एठी ऐड हैला तो एंती वैल्यू गुडा को ऐड करके हमें स्टोर करिवा
ओके देखो ये सब ऐड हो गला 7 + 1 8 8 + 2 10 तापर 9 + 3 होला 12 10 + 4 हो गला 14 11 + 5 हो गला 16 12 + 6 हो गला 18 तो ये हमर सब एलिमेंट ये शो कर बुझी पाइल अमित 500 बुझीला 500 तुम रिप्लाई कहीं करनो सब नो सर तो माइक में प्रॉब्लम थी। ओके सो एटा ला हमर आरए देन मु नेक्स्ट कवर करबी हमर ऊप्स रो सेकंड पार्ट को मु कवर करबी
I start with the oops part 2. So in this part, we will cover what like inheritance and polymorphism. Till now, we are creating a classes. So एपर्यंत आमे सब different type of classes बनेले गोटे program रे आमे multiple classes बनोचे. So if you want to relate one class to the another class, then how you have to relate? So we relate one class to the another class by using of the class relationship. So how you identify the class relationship? आमे गोटे class भितरे relationship केमती identify करियो. So we have to identify the class relationship, how one class is reacting with the another class. गोटे class आ गोटे class सहित केमती behavior perform करिवा और तारा action कौन रहिबो. So based upon this, we have to find out the relationship between the classes. Now, there is a question, how many type of relationship is there? So first of all, जेतबे देखिवा आमे जेतबे माँ को सहित कथा होचे, so we are become casual. I'm casually कथा होचे. बाबा को सहित we have to go for more respectable way. When we talking with our brother and sister, we are more casual. Our friend is more casual. So the way of talking, what a third person, जब बाहर लोगों से केमती देखियो, what is the relationship between the two person? Based upon your talking and based upon how you have to behave one person to the another person. So based upon that, one person can judge what is the relationship is there. So based upon this, माने आमे केमती कथा होचे, कथा रो भी गोटे लोको जानी परिबो what are the kind of relationship is present. So that we have to use the different type of relationship in the what type of relationship we have. One is composition relationship, utilization relationship, inheritance relationship,
and instantiation relationship. Okay, so class relationship is of 4 type. One is inheritance relationship, one is composition relationship. Okay, so one is your inheritance relationship, another is instantiation relationship. So right, copy is the pattern lekho. Okay, so there are four type of relationship in OOPS. First is composition relationship. Next is instantiation relationship. Utilization relationship. Then inheritance relationship. Composition relationship रो काम कोन रहइबो? ଗୋଟେ ମିନିଟ Okay, so these are the different type of relationship: composition, generalization, utilization. Or generalization is called as the inheritance relationship, utilization, and instantiation. Composition relationship is what? Now one object include another object as its part is called as the composition relationship. माने हमें शरबत बनौचे, शरबत रे चीनी रहउची, पानी रहउची, तापरे गोळे के हमें पिउचे. That means sugar is a component, so we add in the water, we add in the tea for preparing tea, we add this sugar for preparing the like खीर बने पे हमें यूज कर परिबो. So if you see the example like car body and engine, if you move the
व्हाट इंजिन इंजिन बाहर कर देले कार रो बॉडी रो किछि काम नै कार बॉडी बाहर कर देले इंजिन रो किछि काम नै सो बोथ आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क composition relationship object include another object as its part it contain the object as a has a relationship okay so now गोटे जदि गोटे दर गोटे काढी दबा तार सेटा वर्किंग होबो नाही generalization relationship is what class inherit commonly used state and behavior from other classes each class allowed to inherit from one or multiple classes class inherit commonly used state and behavior from other classes जेंति रहउची we are taking the birth from our parent so we have some kind of characteristics of parent माने हमें बापांकर मुह सेम हे पारे किछि नेचर सेम हे पारे जे जो बापांकर किछि नेचर हम पकरे अछि apart from that we have our own characteristics own nature निजर किछि own nature थाए आ किछि नेचर पेरेंट्स मानकर भी हमें आइ थाउ तसे पिला जन्म वाले कोंती कि बापा बढी जाई छी मां बढी जाई छी generalization relationship is like that so you have a class जेमति कि हमर डिफरेंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर अछि विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 10 विंडोज 11 so that doesn't mean जेतरा हमें विंडोज 10 को जाउचे 11 को जाउचे तारा पूर्व फीचर गुडा को नाही माने कंट्रोल सी जो कॉपी होची कंट्रोल एक्स कट रहउची जेमति विंडोज 10 को गले से फीचर चेंज हो तेरा हुए नहीं से कौन करे ना पुराना कंपोनेंट पुराना फीचर को भी रखे आज वेल आज से कौन करे नया फीचर को भी इंक्लूड करे तो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक दैट द class inherit commonly used state and behavior from other class each class allowed to inherit from one or multiple classes structure and behavior that is common to different class are combined called as the super class माने मु जोटो information टाको कॉपी करिवि सेटा को जे सुपर क्लास from where I copy the information that is called the super class and which class is copied सेटा कोइबा सब क्लास माने आमे होचो चाइल्ड क्लास आमो को जे सब क्लास our parent is called as the super class okay and parent class तो से माने सुपर क्लास रहले आमे ताको तो फीचर कॉपी करूचे गोटे क्लास जदी आ गोटे क्लास रो फीचर टाको कॉपी करूची सो प्रीवियस जोटू से कॉपी करूची सेटा को जे पेरेंट आ जे कॉपी करूची ताको को जे चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास structure and behavior that is common to different class are combined to form a super class subclass is a specialized class of a super class subclass is called as the specialized class specialized class means it contains some additional feature it copy the structure from the parent and has its own functionality super class is called the generalized class generalization helps to create a program that can be customized in accordance with the new requirement generalization अर्थ होची कोन so as per as my requirement I have to change so generalization helps to create the program that can be customized in accordance with the new requirement so that is called the generalization it uses the another class এটা বুঝিয়ালা generalization আমি কি বুঝ পারলে আজ্ঞা utilization relationship is what class uses the another class it means what हमें जतला शॉपिंग करिवा ओके हमें जतला शॉपिंग करूचे ताको हमें यूटिलाइज करिवा जंत के फ्लिपकार्ट हो अमेज़न हो से कोन करूची ना यूटिलाइज करूची काहा को से यूटिलाइज करूची हमें जतबे पेमेंट करिवा से बैंक यूपीआई आपको यूटिलाइज फॉर मेकिंग ए ट्रांजैक्शन the utilization relationship class uses the another class माने एठी ड्राइवर गोटे क्लास रहउची आ एटा होची ड्राइवर कैन ड्राइव द फोर व्हीलर ड्राइवर कैन ड्राइव द बस लाइट व्हीकल एंड हेवी व्हीकल कैन ड्राइव कर परियो so driver is one part but to working the bus driver is required that is a utilization so driver is utilize the bus this is a utilization relationship instantiation relationship is what a relationship between the class and instance of that class
relationship between a class and instance of class. So if it is a Java class, where the instance of class or where the part of the class is. We can say like this bag is belongs to me, this mobile is belongs to me. That means it is a instantiation relationship. Relationship between a class and instance of the class is called as the instantiation relationship. Okay. So okay, so in the next class, I will teach you how this relationship is implemented. Okay.